This is where we start off today. I think we did question one in the last class, right? We did this. Do let me know if we did this. Have we done question one? Sure. Okay. Let's move to next question. Okay, question number two, it says the isotope manganese 56 decays and undergoes beta particle emission to form the stable isotope iron 56. Half-life for this decay is 2.6 hours. Okay. Initially, time is 0, where manganese has a mass of 1.4 micrograms and there is no iron 56. So complete this figure, 7.1, okay, to show the variation with time t of the mass for time 0 to 11 hours. ठीक है, okay. So we started off with manganese. हमने कहा manganese is initially 1.4 micrograms, right? So we have this manganese 1.4 micrograms when time is 0. So what happens with half-life? That means if 2.6 hours passed, right? So manganese should become half of the original value. So from 0 to 2.6 hours, what happens? You see 1.4 to zero point 0.7. Then for the next 2.6 hours, what happens? It decreases zero point 0.7 to 0.35. That's half of zero point 0.7, right? And then further 2.6 seconds, we have 0.35's half, which is 1.18. And then after 2.6 hours more, we have 0.09. Now, if we add 2.6 more here, so what do we land with? That's 10.4 plus 2.6, right? That would be 13. So I have stopped here. Reason why have I stopped here? That would be 0.09's half, right? But I haven't written it. Can anyone guess the answer? Why have it written as? Because they wanted us to stop at 11 hours, right? They don't want to go beyond 11 hours. So that's where we stop, right? That means if we have manganese here, so I can go with, say, manganese mass here, that is 1.4, and then here that would be 0.7, right? So for 2.6, so that's somewhere here, 2.6. So I should go all the way from this to this, right? That would be my first value for manganese, right? Do we get this part? Similarly, for 5.2, we can have a value here, say, somewhere here. So it should be 0.35. That means it should be somewhere here. So we can go all the way till here. Then it goes like this, and all the way it can go like this, right? You can sketch it out for 10 hours. Now, the issue is that I need to show iron, not manganese. But I haven't drawn, yet iron. I've only drawn manganese. Now, how do we figure this masses out? So initially, it becomes very easy to identify that when you started up with manganese, which is 1.4, initially you don't have iron, right? Because manganese has to decay and then it has to become iron and it emitted beta particles. So initially it was 1.4 and then initially this was 0, right? So after one of the half-lives, what happens? This converted to zero point 0.7. So we finally have this iron, right? So we get zero point 0.7. That's because of zero point 0.7 micrograms would be left after first half-life and zero point 0.7 micrograms of iron should be formed because zero point 0.7 micrograms of manganese has decayed. So zero point 0.7 has decayed. That is led to formation of iron 56. So do you guys get this? Nice. Now, if I go further, there is
further decay of zero point 0.7 to 0.35. So from zero point 0.7 to all the way to 0.35. Now what happens? Iron was initially zero point 0.7 grams available, right? Now what's left of manganese is 0.35. तो जो बनेगा वो कितना होगा? So because 0.35 is left, right? बाकी decay हो गया होगा. So whatever that decay is, that should be added here. So if I add 0.35 to zero point 0.7, what do I get? I get 1.05, right? Do we get this? ये मैं समझा के गया था क्लास में, मैंने कहा फिर भी इसको रिपीट कर दूं. So that is the original mass I had, right, of manganese. और second half life के बाद I am having this much mass left. तो जो बचा है उस उतना ही एग्जैक्टली कन्वर्ट हुआ होगा आयरन में, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. प्लीज टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट. नो वन इज सेइंग दिस twice is this. No, 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 no. Zero point 0.7 times 2 is not 1.05, right? That's 1.4. अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसको टॉइस करते जाएंगे तो ये टेबल बन जाएगा, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. 0.75, 0.7 plus the remaining amount. So these two being added gives you this. Do we get this? Is it clear? Similarly, what happens next? We add, 0.75, so 0.18 to 1.05. We have 1.22. Then we add 1.22 to the remaining zero point 0.09. That's 1.319. Again, we stopped here. Why? Because this is the total time for 11 hours. Now you can just give it a sketch. Okay, it started from all the way zero. It has to go. अगर 11 हम plot करेंगे तो 11 would be somewhere here. लेस देन 1.4. तो 11 यहाँ पे कहीं पे हम खत्म कर देते हैं इसे. सही, 11 एग्जैक्टली यहाँ पे होगा और 1.4 से थोड़ा कम होगा. सो इट हैज टू बी अ स्मूथ कर्व लाइक दिस. डू वी गेट दिस? दैट इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन. अरीज एक्सपोनेंशियल कर्व होते हैं जो भी हाफ लाइफ के कर्व्स होते हैं. तो हमने एक इक्वेशन की थी, दैट वाज एन नॉट ई विद पावर माइनस लैम्डा टी. So these curves are their exponential curves. So we cannot connect a straight line. So as you know, मैग्नीज का डिके हो रहा था हाफ लाइफ के हिसाब से, इस तरह से एक फ्री हैंड कर्व बनाया था हमने. तो बिल्कुल इसी तरह से हमें आयरन का भी एक कर्व बनाना पड़ेगा. और मैंने क्या किया, मैंने बाकी सारे पॉइंट्स मार्क नहीं किए बिकॉज मुझे उसने कहा था कि भाई आप सिर्फ कंप्लीट कर दो फिगर को. तो दैट्स हाउ आई शोड इट कि maximum is 1.31, that's less than 1.4 in 11 hours, right? So I started up with 0 and I all the way went to 11 hours with 1.31. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सिंस आप ये देख रहे हो कि जो रेट ऑफ डिके है, अगर उसको थोड़ा और डीपर डाइव करें क्योंकि ये आजकल एग्जाम में टेस्ट हो रहा है, रेट ऑफ डिके का यहाँ पे जो कर्व बना हुआ है उसका जो रेट स्पीड है वो डिक्रीजिंग है. तो आयरन की भी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो डिक्रीजिंग होगी क्योंकि जब एक रेडियो एक्टिव सैंपल का मास कम हो जाता है तो उसमें एक्टिविटी कम हो जाती है. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है? डू वी गेट दिस? लेकिन अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो फिर हसन ये बना नहीं पाएंगे ना आप. मतलब आप उसके बगैर बना नहीं सकेंगे ना ये. सही है, चलें आगे चल रहे हैं. तो मैंने कहा था कि क्लास में हम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आपने एक देख लिया, ठीक है. रीड एंड राइट में इतने डिफिकल्ट आपको मिलेंगे नहीं, येट आई डू इट फॉर यू गाइस. कि आपका ये वाला जो सेशन है ना, इसमें आपको इतना फ़ायदा हो कि आप कम से कम आपको ये दोबारा टॉपिक ना करना पड़े. इट सेज फॉर द सैंपल मैंगनीज 56 डिटरमिन द इनिशियल नंबर ऑफ मैंगनीज 56 एटम्स इन द सैंपल. ठीक है. सो इफ आई गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन, तो उसने कहा था कि वी हैव 3.4. 3.4 था? नहीं, मेरे पास 1.4 माइक्रोग्राम्स था. आई एम रियली सॉरी. सो इनिशियली आई हैड 1.4 माइक्रोग्राम्स of manganese available, right? So manganese 56 है, that means 56 grams would be equivalent to
1 moles. That's 6.02 into 10 with power 23 एटम्स ऑफ मैग्नीज, राइट। ये डायरेक्टली कर सकते हैं बिकॉज दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हो उसका जितना एमआर होता है उतने ही इक्विवेलेंट एवोगेड्रो पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो दैट्स अ शॉर्ट ट्रिक। आप उसको कन्वर्ट करते हैं जैसे हम क्लास में करते आ रहे थे, यू गाइस वर डूइंग वेरी वेल कि यू डिड, यू हैव टू डिवाइड दिस विद 56 and then you obtain number of moles and then you time it, right? It's perfectly fine, but I don't prefer that। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम 1.4 माइक्रोग्राम्स में डायरेक्टली फाइंड आउट करें कितने एन है। सो दैट एन कम्स आउट टू मी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रेशियो प्रोपोर्शन से, सो व्हाट you'll get is 56n equals to 1.4 exponent minus 6 into 6.02 into 10 with power 23, where n I have here is 1.51 इंटू 10 विद पावर 16। अच्छा, मेरे पास अभी ये आंसर आ रहा है तो आप ये चेक भी कर लेना बाद में कि ये सही आ रहा है या आपके पास कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है। आई एम ह्यूमन, आई कैन मेक एरर्स। तो देख लेना, काम यही होगा। नाउ दिस वांट us to find out initial activity। now how do we find out initial activity? They want us to find out a find out करना है। So we have this formula, a is equals to minus lambda n, right? But we have n but we don't have lambda, so how do we figure that this part out? Any ideas? How do we figure this part out? Lambda. So I remember doing formula t half is equals to 0.693 over lambda, right? उन्होंने हाफ लाइफ खुद दी थी मुझे। दैट वॉज supposedly 2.6 आवर्स जिसके ऊपर मैंने सारी वर्किंग की है। So that's 2.6 hours. That means 24 into 3600. This converts this hours into seconds. So we have 0.693 over lambda. We can figure lambda out, which would be 0.693 over 2.6 into 24 into 3600, right? So that's lambda. इस तरह से lambda जब मैंने figure out किया, so what I'm having is 7.4 into 10 with power minus 5 seconds inverse. Now I'm going to plug this in here. एक्टिविटी वुड बी माइनस लैम्डा को आप नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं वैसे, 7.4 एक्सपोनेंट माइनस 5 इंटू एन, एन इज 1.51 इंटू 10 विथ पावर 16, सो एक्टिविटी कम्स आउट टू बी 1.1 इंटू 10 विथ पावर 12 becquerel। So do we get this? बात तो सही की है मोमिन ने कि सर ऑलरेडी आवर्स में तो आप 24 आवर्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो या दैट्स, दिस नीड्स करेक्शन। 2.6 इंटू 3600 होगा। दैट मीन्स 2.6 इंटू 3600, अच्छा 2.6 इंटू 3600 ही किया था मैंने, 9.3 आ रहा है, ठीक है। आंसर इज फाइन, आंसर इज फाइन, कैलकुलेशन एरर नहीं है, बस ये 24 एक्स्ट्रा था। वेरी गुड, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। तो 24 नहीं होगा क्योंकि आवर्स में ही था ना, तो हमें डेज से तो आवर्स में नहीं गया। आई मेड दिस एरर, नाइस, ठीक है। अब आते हैं पार्ट सी पे। व्हाट डज पार्ट सी टेल्स अस? पार्ट सी टेल्स अस दैट डिटरमिन द टाइम एट विच दिस रेशियो इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। वो कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ mass of iron over mass of manganese is 9/1। ये रेशो कह रहा है ना, और इसके लिए टाइम चाहिए मुझे। ठीक है। तो इफ आई गो विथ mass equation, mass with time, that was the equation we did, right, mass के लिए। तो अब अगर मुझे yeah, I can go about that, ठीक है। अच्छा, think about it, I get this। so mass ratio अगर मैं फिगर आउट करूँ सिर्फ मैंगनीज के लिए, राइट, डिके कांस्टेंट मैंने मैंगनीज का निकाला है ना, तो मुझे आयरन का तो पता नहीं है, ना आयरन की हाफ लाइफ का अंदाजा है मुझे, तो मैं आयरन की टर्म में नहीं कर रहा, मैं मैंगनीज की टर्म में कर रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मैं आयरन के लिए कर सकता या नहीं कर सकता। सो दिस एम ओवर एम नॉट, दिस इज बेसिकली mass after a certain time of manganese, and this is original mass of manganese, right? ये मैंगनीज का ही होगा ना इक्वेशन। यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, पहले आपसे ये बात करते हैं कि आपको ये समझ में आती है बात है नहीं। M represents mass after a time, जो भी टाइम है, we have yet to find that out, और M naught is the original mass available of manganese, right?
तो दिस बेसिकली इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, एक्टिविटी ऑफ मैंगनीज, राइट। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जो मास ऑफ आयरन टू मैंगनीज है वो है 9:1। ठीक है। तो जब आयरन बेसिकली 9 टाइम्स एज मच मैंगनीज होगा, तो भाई इस मोमेंट इन टाइम पे प्राइमरीली स्पीकिंग मैंगनीज होना चाहिए ओनली 1 पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल पार्ट्स लेफ्ट, राइट। अब क्या मतलब है इस बात का? देखें, टोटल मास रेशो यहाँ पे कितना है, 10 है ना। उसमें से आउट ऑफ 10 9 पार्ट्स किसके बच रहे हैं, हमें वो टाइम चाहिए ना। आयरन का कह रहा है वो कि आयरन इज 9 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू मैंगनीज। सो इफ वी गो फॉर मैंगनीज, दैट शुड बी ओनली 1/10, राइट। मेक सेंस? डू वी गेट दिस पार्ट? So if we substitute 1/10 here and we plan to have lambda यहाँ पे हमने क्या निकाला था, देखिए कांस्टेंट, that was 7.4 into 10 with power minus 5 times t। तो अब आप इसका ln कैलकुलेट करोगे, you'll do ln 1/10 and this becomes minus 7.4 into 10 with power minus 5 t, और ln e 1 हो जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, and then you'll figure out t, which comes out to be in this case, जब मैंने टाइम निकाला तो वो आया है 3.1 इंटू 10 with power 4 seconds। बट दे वॉन्ट अस टू हैव टाइम इन, आई थिंक, आवर्स, राइट। लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ना देख लेते हैं। नो, दे वॉन्ट अस टू हैव टाइम इन आवर्स। तो अब क्या करेंगे? तो डिवाइड बाई 3600 कर देते हैं, राइट। सो 3.1 इंटू 10 with power 4 डिवाइडेड बाई 3600। सो what we have is 8.61 hours। ठीक है। ये एक नई बात थी, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा रीड एंड राइट में। तो अच्छी चीज़ हमने देख लिया। दोबारा से देखना है आपको हसन उबैद, पहले आप कह रहे थे यस, अब आप कह रहे हैं कि आपको दोबारा से समझाएं, कोई मसला नहीं है। देखें, हमने ये कहा कि हमारे पास जो मैंगनीज भाई हैं वो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गिवन रेशो 9:1 है, कितने होंगे? लेट्स थिंक अबाउट इट। तो हमने कहा कि भाई मैंगनीज है ओनली 1 पार्ट, आयरन है कितना, 9 पार्ट्स, राइट। यही कह रहा है ना वो, इस इक्वेशन के हिसाब से उसने नंबर दिया 9.0। दैट मीन्स अगर हम एक्टिविटी ऑफ मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज भाई तो ओनली 1% बचे होंगे, जबकि टोटल जो उसमें से 10 पार्ट्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं आयरन में, राइट। तो 9 out of 10 parts आर कन्वर्टेड इनटू आयरन, एंड ओनली 1 out of 10 part इज बेसिकली मैंगनीज, राइट। वी गेट दिस? सो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज 1 - 9/10, क्योंकि 1 मतलब 100% ऑफ मैंगनीज था। सो यू आर गोइंग टू गेट 1/10, right? Take your time and then let me know if there is anything that's still not clear. Is it clear to everyone? तो मैंने मारी नहीं, मैं रोकूं तो बच्ची आप सेल्फ डिफेंस यू ना ये बताओ मारूस ये आपकी तो मैं आपकी दूँ आप So, is it clear to everyone? Any questions? Any doubts? Anything all good? ठीक है. Let's save this file and move ahead. Okay, so what do they say? Third question, they say uranium is a radioactive and emits alpha particles, and okay, 2.65, and that's 604 becquerel. They want us to find out number of nuclei. I think you guys are now proving this, right? So we can go with uranium 234. So we can do 234 is equals to 6.02 into 10 with power 23, right? That's 234 grams. Naturally, MR की बात हुई थी. So कितना given है? That's 2.65 micrograms. That means minus 6 is equals to N. So if we find out N, we are going to get 6.8 into 10 with power 15. That's nuclei. Simple, right?
Now, decay constant. So, do we have half-life? अच्छा decay constant फाइंड आउट करना उसने मुझे एक्टिविटी दी है तो मैं हाफ लाइफ की क्या जरूरत है दैट 604 सो a is equals to minus lambda times n activity is 604 I don't know about lambda I'm going to pluck this out 6.8 into 10 with power 15 right माइनस मैंने इग्नोर कर दिया सर आपने माइनस इग्नोर कर दिया सर आपने माइनस इग्नोर कर दिया so is it okay to ignore minus yes it's perfectly fine to ignore minus nothing happening so decay constant becomes 8.88 into 10 with power minus 14 then half-life in years. So, well, since I have decay constant, so I can go T half is equals to 0.693 over lambda, right? So 0.693 divided by 8.88 exponent minus 14 gives us time in second. So what's that? So I got 7.8 into 10 with power 12. I'm repeating कि अगर आप अपने आंसर्स चेक करना चाहो तो ज़रूर चेक कर लेना बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग कैलकुलेशन अभी उसने प्लग इन करके मोमिना ने बताया था सो दे वांट अस टू फाइंड आउट एट ईयर्स राइट तो अब क्या करूँ मैं मेरे पास सेकंड्स तो आ गए तो 7.8 एक्सपोनेंट 12 को क्या करूँ डिवाइड कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ सर आप कंफ्यूज कर देते हैं सर अभी तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो गए क्या 365 इंटू 24 इंटू 3600 गिव्स अस व्हाट कितना आ रहा है तो 0.25 एक्सपोनेंट 6 तो 0.25 मिलियन ईयर्स ओ माय गॉड हाफ लाइफ नहीं सॉरी 0.25 एक्सपोनेंट 10 आ रहा है भाईजान 6 नहीं आ रहा 10 आ रहा है million 0.25 million years right nice do we get this बेटा ये समझ में आता है सबको पहले मूव अहेड आप एक दफ़ा कैलकुलेशन करके देख लो अगर कोई डाउट है तो बता डन चलो लेट्स मूव अहेड आगे चलते हैं इसमें क्या है इसमें डेंसिटी दी हुई है प्रोबेबली इसमें कुछ नया भी होगा चलो ये भी करते हैं लेट्स ट्राई दिस स्ट्रॉन्शियम 90 इज a radioactive isotope have a half life of 28 years decay constant हमें फाइंड आउट करना है सो decay constant फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे तो वी कैन गो विथ e half is equals to 0.693 over lambda, right? So lambda would be 0.693 over half life. Half life है 28 years. तो years हैं तो 365 रख देते हैं साथ में into 24 रख देते हैं into 3600. So what do we have in lambda? We have lambda as 7.8 exponent minus 10 second inverse, right? Then they say mass of strontium in the same sample. Mass I have to find this out. Hmm. So how do I find this out? Mass कैसे find out करें? So I have density, but I have activity as well. Let's find out number of atoms and then we'll find out, mass. So we can go with activity as minus lambda n, right? So we have activity which is 6.4 into 10 with power 9 and 7.8 into 10 with minus 10 times n. So let's get n. What's n? N comes out to be 8.15 exponent 18, right? That's number of atoms. So we have this much nuclei. So I can go with 90 grams contains 6.02 exponent 23 atoms, right? So 8.15 exponent 18 nuclei would give me, mass, right? So I can do cross multiplication and I'm going to get
90 into 8.15 exponent 18 divided by 6.02 exponent 23. So mass का आंसर आ जाएगा directly in grams, which comes out to be 1.22 exponent minus 3 grams. बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर ग्राम्स में डायरेक्टली आया, राइट? ये बताओ, बात समझ में आती है? नाइस, लेट्स मूव अहेड। वो सेव करते हैं, देखते हैं आगे कोई पार्ट में नहीं कुछ चाहिए हो। वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? They want us to find out volume as well. So we can just go about volume would be density is mass per unit volume, right? So question में I think density given थी. That's 2.54 grams per cubic centimeter, right? So 2.54 grams, mass is 1.22 exponent minus 3 over volume. So volume would be 1.22 exponent minus 3 divided by 2.54. So volume comes out to be कितना आ रहा है भाई? 4.8 इंटू 10 विद पावर माइनस 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ये वो क्या कह रहे हैं? By reference to your answer in B3, suggest why the that has been contaminated with strontium presents a serious health threat. तो B3 में जो मेरा आंसर है वॉल्यूम 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 4, 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 जो आंसर था, उससे वो कह रहे हैं कि इसके आंसर से ये बना हेल्थ हैजर्ड। अच्छा, 4.8 यानी कि 4.8 मिलीलीटर नहीं, 4.8 exponent minus 4 milliliters. It's like 0.00048 milliliter. So this milliliter basically was 6.4 exponent 9 becquerel. Oh my god. क्वेश्चन को देखो अगर, तो उसमें इतनी एक्टिविटी इसने दी है becquerel में, राइट? दैट वाज द एक्टिविटी गिवन एंड दैट्स द वॉल्यूम। तो इतनी छोटी से वॉल्यूम में इतना ज्यादा डिके हो रहा है, तो सही है ना? तो हम ये लिख लेते हैं, वेरी हाई एक्टिविटी फॉर अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, और क्या देखें? B3 से तो ये निकाल लिया। हाफ लाइफ कितनी थी इसकी? 28 ईयर्स थी हाफ लाइफ, राइट? तो ये भी लिख देते हैं, इतनी ज़्यादा हाफ लाइफ है तो लॉन्ग लास्टिंग है। वेरी हाई हाफ लाइफ, वेरी लॉन्ग, हाई नहीं लॉन्ग, हाफ लाइफ बहुत लंबी ड्यूरेशन तक ये चलता रहेगा मजाक। और क्या सीन है? तो 2 मार्क्स है ना, बस सही है, ठीक है, 2 ही हुए और तो कुछ बन भी नहीं रहा। ठीक है, गॉट इट। और बताओ, और क्या है? शो दैट लैम्डा टी हाफ एस 0.693, यानी किया तो ऑलरेडी, आप कर लोगे राइट, क्लास में किया था हमने। मैथ्स निकालना है, वो भी कर सकते हो आप। एक्टिविटी, ये सब कर सकते हो आप। सिमिलर फैमिली के क्वेश्चन है, एक देखा था मैंने, और अगर मैं आपको वो करा दूँ, चलो ये करते हैं। पहले फॉस्फोरस वाला करें, नहीं फॉस्फोरस वाला भी आप कर लोगे। दिस दिस इज अ मस्ट डू क्वेश्चन होगा, ये देख लेना। जो फॉस्फोरस वाला है। मैं आपको एक और कराना चाह रहा था, ये वाला, यस। अच्छा, इसको रीड करो जरा, क्वेश्चन पूरे को, ये क्या कह रहा है? वो देख के ना कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। So it says, in order to determine the half-life, a student measures the count rate near to the sample. So initially, the measured count rate is 538. After a time of 8 hours, the measured count rate is 228 per minute. Use this data to determine the half-life. अब ये half-life कैसे determine करें हम? चलो, let's try this. So, what is this 538 per minute? Can I do that's activity?
तो आई कैन फिगर दिस इक्वेशन यूज राइट। तो स्टार्टिंग में कितना था, मैं इनिशियली वी हैव 538, so that's initial. After a certain time, that's a, so a over a naught is equals to e with power minus lambda t, right? So we can go with a की जगह पे that's 228 और a naught is 538। मैं मिनट्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो दोनों में कन्वर्जन करूंगा, आई एम अल्टीमेटली गोइंग टू गेट सेकेंड्स, सो माइनस लैम्डा टी। टी फाइंड आउट करना है तो, नहीं हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से डे के कांस्टेंट निकालते हैं पहले। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 8 आवर्स है, दिस इज नॉट हाफ लाइफ, ठीक है ना, ये 8 आवर्स है, दिस इज नॉट हाफ लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले यहाँ से लैम्डा निकालते हैं, तो दैट वुड बी 228 डिवाइडेड बाय 538, इसका हम लॉग ले लेते हैं, दैट्स 228 ओवर 538, ठीक है। सो दिस वुड बी माइनस इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 8 इंटू एल एन ई, राइट, अगर एल एन लेंगे। सो इधर से अगर हम फिगर आउट करते हैं लैम्डा, सो व्हाट डू वी हैव हियर, लैम्डा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास लैम्डा ये निकाला, सो लेट्स डू इट टुगेदर, एल एन ऑफ 228 डिवाइडेड बाय 538, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, सो आई गॉट 0.107, 0.107 आवर इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आवर इनवर्स, क्यों, क्योंकि मैंने आवर्स में प्लग इन किया था, राइट। डू वी गेट दिस, और आवर्स में आंसर देना है, लेकिन अभी तक हाफ लाइफ नहीं आई, तो हाउ डू फिगर आउट हाफ लाइफ, I can go with T half is equals to 0.693 over lambda, right? So 0.693 over 0.107. So that's T half life. 0.693 divided by our given answer. This gives us 6.45 hours. कुछ समझ आया? बेटा ये बताओ, बात समझ में आती है? नाइस। अच्छा, तो अब आपके पास जो टाइम है उसमें आप मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा लंबा सेशन ले लूँ, बट ये है कि आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से ग्रैब किया है। तो अब बस दो चीज़ें आप इसमें से ज़रूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी है आपको, मेरे मशवरे में ज़रूरी है। एक तो ये कि ये वाला क्वेश्चन, ये बाइंडिंग एनर्जी के साथ है, ये जो नेक्स्ट है, ठीक है ना, ये कर लेना। और और अल्लाह आपका भला करे। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको एनर्जी वगैरह निकालने का वो कह रहा है, बाकी तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई होप दिस सेशन हेल्प यू गाइस अप, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।